जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? सो टुडे आई एम विद फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सबको बिल्कुल खैरियत से हों, अल्लाह करे सब अपने घरों में सेफ़ हों और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो प्लीज़ अपने माइंड को वास्ट करें और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर दैट इज़ फ्रॉम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 4। ठीक हो गया? So then, before starting the today's lecture, let's go through the previous knowledge and what is the meaning and the definition of the term bioenergetics. It means मैं अगर पहले से पूछ रही हूँ आपसे previous knowledge कह रही हूँ, means आपको कुछ ना कुछ idea होना चाहिए about bioenergetics as you already have done this in your ninth grade. So obviously, I'm not expecting that you need to tell the whole of the concept, but at least a slight idea regarding the bioenergetics and what is metabolism. Obviously you should know now what is the source of energy in this world. A very simple question, even the students of 5 6 class 5 6 even fourth fifth can answer this question. Name any energy producing and energy utilizing reaction. So you just need to name the reactions. So whether you know the answers of these questions or not, it's not a big deal. We will sort out these questions in our today's lesson. But if you know the answers of these questions, then it means that you have a good memory, you have a good understanding of the major terms. For this, I wish you a very best future. Okay, ji, so let's start with the introduction to bioenergetics. My today's topic is introduction to bioenergetics. Let's start the topic from the meaning of the term bio and energetics. You all know the meaning of the term bio means life or the living things. That means we are concerned with the living world. Okay, we are concerned with the living world. Energetics, it means something relating to energy, study of energy. But this study, this relationship, this understanding of the energy is only and only in the living world, right? So we are all discussing the things in the living world. Okay, then is uh, let's start with the definition. The study of energy relationships and energy transformation and transduction in the living organism. A perfect and a beautiful definition of the bioenergetics. So energy relationships. It is the study of energy relationship. Like for example, if you are taking the plants, and plants is going to produce their food by taking energy from the sun. अब वो सन से एनर्जी ले रहे हैं, so there is some relationship between them. But we human beings or animals and any other heterotroph cannot take that energy from the sun. It means we need, and sun is the only source of energy, and it means we need some transformation of this form of energy which is produced by the plant. So it means energy is actually, there is a relationship between the plants and sunlight, then the relationship between the plants and the other rest of the organisms, and then there is a very important of the transformation and translation of the energy in the living organisms. So हम ये सारी terms अभी discuss करेंगे in the later lecture. So energy से start करते हैं. What is energy? Energy is actually the ability to do work. सबको मालूम है ये डेफिनेशन. एनर्जी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू समथिंग. अगर आप एक मशीन लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रिज ले लेते हो, कोई टीवी लेते हो, व्हाट दे आर परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज बाय टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो कोई एनर्जी लेके अपना ड्यूटी परफॉर्म करें. सेम इज द केस ह्यूमन बॉडीज. And I am taking a living body, a human body, or any other living body as working machine. In our body we can see that there are numerous reactions. समझ रहे हो ना कि हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस चल रहे हैं. उन सब रिएक्शंस को क्या चाहिए? काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. Because we are too like the machines. We too have to perform the activities, and by for performing the activities we need energy. Now what are the activities we have to do, our body have to do, and what is the need of this energy? Let's discuss the need of energy for the processes for which we are needing these energy, these forms of energies. So growth, सबसे पहले तो growth है. Now can you recall that when you were in class 3, in class 4, तो आप कितने छोटे थे? पिछले साल की, बल्कि उससे पिछले से पिछले साल की जो कोई आपके स्वेटर्स होंगे आपको नहीं आते होंगे अब इन समर विंटर्स में. छोटे हो गए हैं आपको, उनके बाजू छोटे हो गए हैं ना, आपको थोड़े टाइट हो गए. इट मीन्स यू आर ग्रोइंग.
यू आर इन अ ग्रोइंग एज नाउ, एज यू आर इन अ ग्रोइंग एज, तो आप बड़े होते जा रहे हो। 3-4 क्लास को याद करो, कितने छोटे थे, अब कितने बड़े हो गए उसके हिसाब से, राइट? योर बॉडी इज ग्रोइंग। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो बगैर किसी कुछ एनर्जी लिए, बगैर बगैर कोई वो काम के बगैर बड़ी होगी आपकी बॉडी? नो। ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल। इट मीन्स ये दोनों काम हुए आपकी बॉडी में, and for these two things we need energy, and we take energy in the form of food। और वो फूड की कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हम उसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। देन इज द रिपेयर। आपने देखा होगा कुछ छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, या हम सुनते हैं फलां बंदे का ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, हाँ, मगर उसके बाद वो ठीक हो गया, रिपेयर हो गई बॉडी, हाँ, वो रिपेयर हो रही, सारे वूंड्स ठीक हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बॉडी ने नई चीज़ें बनाई, न्यू स्किन बनाई, स्किन को आपस में जोड़ा। इसका मतलब उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये सारे काम हो पाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। फिर तमाम तर बॉडी में मेटाबॉलिज्म, तमाम तर बॉडी की मेटाबॉलिज्म, ऑल्दो कि ये ग्रोथ और रिपेयर टू आर द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, बट वी आर आई एम टेकिंग दिस metabolism as a separate thing, like for the protein synthesis in our every cell, formation of ATP in every cell, utilization of ATP by every tissue. So this is what is called as metabolism. Whatever the cellular activity is going on in our cell is called as metabolism, whether it is the breakdown of the bonds, whether it is the formation of the bonds, right? I'm not using the terms that this time. Now, active transport. Active transport, you all know, movement of the molecule requires energy. Some of the molecules, they can move across the membrane without taking any energy, but some other molecules which are very needing to our body, like for example, the movement of the nerve impulse is energy requiring process. That is why it is called as active transport. And then maintenance of the body temperature above all. So we have a very fixed, in fact, in a very narrow range, we are fall in a very narrow, that is 37 degrees temperature, Celsius temperature of our body. We have to maintain that temperature. Why? Because all of our body organs, they work smoothly on this temperature. That is why we have to maintain this temperature. Our hypothalamus and all of the cellular activities of the liver are for the maintenance of the body temperature, both in winters and in summers. Did you notice this thing? In winters, our core is warm, हमारी body जहाँ पे heart, brain, body सारे organs है वो गर्म होता है, but हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। But the trunk region has a specific temperature, because all our enzymes, they work at that temperature. तो उसका temperature maintain किया जाता है by performing different cellular activities. Same is the case in summers. समर्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है बॉडी का, तो हमें स्वेटिंग होती है ताकि हमारा टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल रहे, वरना हमारी बॉडी के एंजाइम्स वगैरह और प्रोटीन्स डैमेज हो जाएंगी। सो हमें इन सब कामों के लिए वी नीड एनर्जी एवरी, ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मीन्स ये तो हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स, तमाम तरह हीटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, जिनको भी आप लिविंग कह रहे हो, उन सबको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, एंड दे नीड एनर्जी। ठीक हो गया। ना बहुत फेमस चीज़ है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का जिक्र पहले करना चाह रही हूँ यहाँ पे, फिर बाद में बाकी एनर्जीज बताती हूँ। सो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, energy cannot be created or destroyed but can be changed from one form to another। तो सब बचपन से बच के पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता है, यानी कि we are unable to produce any single molecule of energy and we are unable to destroy it। मगर क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि प्लांट सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं, हम सनलाइट से एनर्जी नहीं ले सकते, मतलब हम वो वाला प्रोसेस नहीं कर सकते, कोई भी हीट ऑफ नहीं कर सकता। मगर अब प्लांट ने एनर्जी ले ली है, वाहिद रास्ता एनर्जी का सन था, उसने ले ली एनर्जी, अब वो खाना बना रहा है, अब हमें भी तो कुछ खाना है, बाकी जानवरों ने भी खाना है, तो हम उससे ले लेंगे। तो अब हम उस फॉर्म में तो नहीं ले सकते जिस फॉर्म में उसने ली है, किसी और फॉर्म में लेनी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ कन्वर्ट की जा सकती है। ये हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज में।
तो टाइप्स ऑफ एनर्जीज जनरल डिस्कशन है ये सिर्फ। टाइप्स ऑफ एनर्जी में सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले हमने देखा, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। याद रखें, ये भी प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, दैट सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज बाय द वे आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कौन कर सकता है, दिस इज योर प्लांट्स ओनली एंड ओनली द ऑटोट्रॉफ्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन यूटिलाइज दैट सनलाइट, एंड for the living system like us, like heterotrophs, only two things, sorry, there are two different types of energies, by the way, which are most suitable to us. One is light energy and the chemical energy. Light energy is taken by the plants and chemical energy is taken by us. तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द सनलाइट फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम सन एंड देन कन्वर्टिंग दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैं आपको एनर्जी साइकिल अभी दिखाऊंगी। दे आर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दिस केमिकल एनर्जी देन इज टेकन बाय अस। हमने ले ली, हमने प्लांट्स को ईट अप कर लिया, और हमने जैसे हीट अप किया तो दिस केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हमने उस एनर्जी को एटीपी बना दिया, एक केमिकल एनर्जी दूसरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड देन हमने रनिंग की, वॉकिंग की, ग्रोथ की, हमने ग्रोथ करने के अलावा हमने प्रिपेयर किया, हमने मेटाबॉलिज्म की सेल के अंदर, हमने जो भी एक्टिविटी की उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हमने बहुत खूबसूरती से ये देखा कि दुनिया में एक एनर्जी कन्वर्ट हुआ करती है सिर्फ, है ना। हमने नोटिस की ये चीज़, हमने ये नहीं देखा कि हमने खुद बना ली, नहीं, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, ग्रेविटेशनल है, न्यूक्लियर है, रोटेशनल है, विंड एनर्जी है, वो कौन कौन सी है, हम उसमें से कोई भी नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ लाइट और केमिकल एनर्जी लिविंग सिस्टम के लिए बनी है, वो इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं और अपने अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि थोड़ा सा तुम्हें एनर्जी के कन्वर्जन और एनर्जी की यूटिलाइजेशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो एक पॉइंट हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। तो देन इज एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, कुछ एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस हैं जहाँ से एटीपी फॉर्म हुआ, राइट, जिसको आप कहते हो, जैसे हमारी बॉडी में फूड की ब्रेक डाउन हुई, जब फूड की ब्रेक डाउन हुई तो एटीपी बन गया। फिर जब एटीपी, अब एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस हैं, अब वो रिएक्शंस जो आप परफॉर्म करोगे, जैसे ग्रोथ, जैसे रिपेयर, ये एटीपी यूज़ कर लेंगे, तमाम द सेलुलर एक्टिविटीज़ एटीपी को यूज़ कर लेंगी। तो ये एक साइकिल, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं, ये इससे हम करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप देख चुके हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट ओनली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, ये मुझे इतनी पसंद है ये चीज़ कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मैकेनिज्म रखा हुआ है, अपने हाथ में रखा हुआ है ना, हमारे हाथ में नहीं, तो हम तो सिर्फ अपने हिसाब से चलते, हम तो भूल ही जाते कि प्लांट्स भी हैं, हम तो भूल ही जाते कि फंजाई भी है, एनिमल्स भी हैं। तो अल्लाह ताला ने सबका बराबर हिस्सा रखा है, दैट इज़ वाई द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन दिस वर्ल्ड इज constant. Now this is the energy cycle. Sun, the only source of energy, sun is taken by the plants, plant is going to convert into chemical energy, that is glucose, and then glucose is taken by the plants and animals as well, and plants as well, and all of the heterotrophs, and they are going to convert into by doing cellular respiration, they are producing ATP, and then ATP is converting back to water and carbon dioxide, which is going to utilize by photosynthesis by the plant. This is what is called as relationship energy relationship or energy cycle or energy transformation. This is what is called as bioenergetics. Now synthesis and utilization of energy, हम थोड़ा सा को ध्यान से और देखते हैं synthesis utilization of energy को। ये देखो आप, light आपने is going to trap by the chloroplast, and chloroplast में photosynthesis हुई, glucose form हुआ, which is the only source of energy your cell can recognize. Glucose is the only source of energy your cell can recognize, and mitochondria is going to take that glucose और in the presence of oxygen, mitochondria वो glucose भी लेगा, वो oxygen भी लेगा, and going to produce carbon dioxide and water along with a huge amount of ATP and energy. ठीक है ना, तो this what is called as utilization and
synthesis of energy. This is going to form the energy, this is going to utilize this energy. इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि सिंथेसिस हुई, यूटिलाइजेशन हुई, ग्लूकोज के साथ सारा मामला हुआ, ग्लूकोज को फॉर्म किया गया, ग्लूकोज को इस्तेमाल किया गया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एंड देन कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. दिस व्हाट इज, आपने ये एक जो स्लाइड है ना, आपने पक्की याद कर लेनी है टू राइट फॉर द बायोएनर्जेटिक्स. And एक और important point about bioenergy is that it is actually involving in the making and breaking of the chemical bonds and how cells transform. The making and breaking of the chemical bonds resulting in the production of ATP, and metabolism is actually the sum of all the reactions that takes place in a cell of organisms. तो ये सब चीज़ें हैं. So अब मैं वही chemical cycle, वही energy cycle in terms of metabolic pathways थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि अब आप थोड़ा बड़े होते जा रहे हो ना, तो आपको सारी टर्म्स का पता होना चाहिए. तो यू नो दैट एनर्जी साइकिल इज देयर, ठीक है ना. एनर्जी साइकिल हैज एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे. सो बेसिकली हमारी बॉडी किस में चल रही है, मेटाबॉलिक पाथवेज की बेस पे चल रही है. तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ metabolic pathways, anabolic pathway and catabolic pathway. Anabolic pathway, as far as anabolic pathway is concerned, it में आपको पता चल गया synthesis of glucose. सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रही है एनाबॉलिक पाथवे में, और utilization of glucose or in the catabolic pathway. Anabolism is the synthesis and catabolism is the breakdown. ये दो reactions की sense में भी आपको इन दोनों reactions का पता होना चाहिए. अब सो के जो photosynthesis और जो respiration है are the beautiful example. These two reactions actually you know क्या कहते हैं उसको, जिंदगी को चला रहे हैं. ये दो रिएक्शन सारी लाइफ ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल किए हुए हैं. Are the perfect example, beautiful depiction of the metabolic pathway and the energy cycle, and both of them are the perfect reverse of each other as well. So ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना. यही दो बातें वो पिछली स्लाइड लिखते हो तुम अगर बायोएनर्जेटिक्स में, तो दैट्स वुड बी enough for you people. Now once again this is the recap. तो एक दफ़ा recap देख लो. एनर्जेटिक्स क्या है? Study of energy requirements and the flow of energy within this system. आसान definitions. Bioenergetics study of the balance of between energy intake in the form of food and energy utilization by animals for life sustaining processes. Processes कौन से हैं वो अब आपको बता चुकी हूँ मैं. Core concept is availability of the free energy, and life is an energy intensive process. एक और बहुत प्यारी बात कि लाइफ इज़ एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस. अगर तो एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती. ठीक है ना. कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एनर्जी इज लाइब्रेटेड, इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी व्हिच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द living cell. So that's all about from my side about the bioenergetics and the energy relationship and the energy transformation. So this is what is called as bioenergetics introduction to the bioenergetics. So we will meet in the next lecture with the new topic. Up till then अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.